basically having straight or curved blades, and these laryngoscopes, they are basically placed under the epiglottis. So they are placed under the epiglottis and they are used to expose the vocal cords when you are intubating a patient. तो यहाँ पे ये आपको vocal cords दिख रहे हैं. So to separate this epiglottis, you're using a instrument with a curved blade or a straight blade, which is called as the laryngoscope. तो जो ये डॉक्टर ने होल्ड किया हुआ है to which is placed just below the epiglottis to visualize the vocal cords so that they can place the endotracheal tube inside. This is your laryngoscope. ठीक है, ये visualization करवा देता of the vocal cords, right? Right, epiglottis leaf like structure है ना, तो वो epiglottis को displace कर देता है away so that you can visualize the vocal cords clearly and you can place your endotracheal tube inside. ठीक है, so that instrument which you are using is a laryngoscope. Understood? Yes, ma'am. ठीक है. Next is your nasopharyngeal or airway or oropharyngeal airway. Nasopharyngeal, as the name suggests, is introduced through the nasal cavity into the pharynx. ठीक है, यहाँ से nasal cavity से pharynx में जाएंगे. So what they are doing is they are preventing the tongue fallback की वजह से जो airway displace होता है उस सबको reduce कर देता है. So it keeps the opening of the pharynx patent. अगर nasal fracture है and you have nasal bleeding, then what you can do is you can place a oropharyngeal airway also, which will prevent the tongue fall back into the pharyngeal cavity. Okay, so these are your temporary airway management devices. And next is your these are basically your laryngeal mask airways or LMAs. They are basically used to whenever your endotracheal intubation is not is very difficult or is very difficult. So how will you identify? Here you will see a cuff of the mask. ठीक है, तो बैग वॉल मास्क एयरवे देखा है किसी ने? बैग वॉल मास्क जो होता है, जो आप ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए मास्क लगाते हो, यू हैव सीन दैट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Ambu. तो वैसे ही हाँ, एम्बू बैग, वेरी गुड, एम्बू बैग. ठीक है, वैसे ही मास्क होता है विच इज basically mask होता है which goes into the laryngeal cavity. ठीक है, and there you basically push it, और यहाँ पे भी you have one pilot balloon where you can inflate it and keep this opening patent. ठीक है, तो ये मास्क जैसा जो होगा वो laryngeal mask airway होगा और LMA होगा. ठीक है, endotracheal tube तो हर किसी को पता है. This is basically a plastic tube which is placed inside the trachea to maintain an open airway, and this is basically done to provide your anesthesia and also in critically injured patient to maintain the airway, trachea को open रखने के लिए. So again it could be placed through the nasal cavity, या तो nose की तरफ से introduce कर सकते हैं या oral cavity की तरफ से introduce कर सकते हैं. So these are जब nose से introduce करते हैं तो these are called as nasotracheal intubation. When you introduce it through the oral cavity, you call it a orotracheal intubation. And then there are different RAE tubes, ringer Aldwin tubes, which are more stiffer. ठीक है, ये ज्यादा stiff होती है and they come in north pole and south pole. तो इनकी जो orientation होती है, this could be either in the north direction or south direction. So if you have to work on the upper jaw or on the palate, you have to use a north pole. If you have to work on the lower aspect of the mandible or on the tongue region, then you have to use a south pole technique. ठीक है, next is your tracheostomy tube. So basically what you are doing, tracheostomy में you are creating an incision over the trachea. तो आप trachea में आप incision produce करते हो and from there directly into that opening you place a airway tube. ठीक है, so for trachea you again have basically an outer tube which will contain basically your cuff, air connecting tube and cuff, and there is an introducer inside. ठीक है, so ये बेसिकली इनर ट्यूब जो होती है, दिस इज बेसिकली डन फॉर क्लियरिंग. क्या होता है, ट्रेकिया में आप इंट्रोड्यूस करते हो तो ट्रेकिया की जो सिक्रीशन है ना, ट्रेकियल सिक्रीशन, दे कैन बेसिकली क्लॉग दी ट्यूब. तो इसलिए हम ये इनर ट्यूब को रिड्यूस कर देते हैं और फिर इनर ट्यूब को आउट करके जो अंदर की सिक्रीशंस हैं उनको हम सक्शन कर लेते हैं ताकि वो जो एयरवे का जो ओपनिंग हमने बनाया वो पेटेंट रहे. ओके, so you will always have an outer tube. ये जो आपको outer tube है, that this is the tube that you will see. इसमें एक flange होता है which is covering to the external skin, and then you have an inner tube which is used basically for cleaning. ठीक है, and then there is a combi tube. Combi tube में क्या होता है, there are basically
two tubes. One of the tube is going into the trachea, the other tube is going into the esophagus so as to prevent the regurgitation of fluids into the trachea. तो एक esophagus को patent रखती है और एक trachea को patent करती है, just to prevent any regurgitation of fluid into the trachea. Now this is a feeding tube. आपने बहुत सारे surgical patients में देखा होगा, there is a tube which is coming out of their nasal cavity. This is called as your nasogastric tube or NG feeding tube, NGT tube. So this basically is introduced from the nasal cavity and it goes into the stomach, and directly you can just provide all kind of nutrition or food, liquid food to the patient through this NG tube. ठीक है, तो सर्जिकल यही राइस ट्यूब है क्या? हाँ, राइस ट्यूब. यही So the name, हाँ जी, nasogastric tube or the rice tube. ठीक है, so this is your feeding tube which you use to provide water and as well as liquid diet to the patient after surgery. Okay, and again this rice tube can come in different gauge, अलग अलग dimension में आता है, and this can come in 14 gauge, 16 gauge needle. तो basically हमारा ये it is basically having different marking. ठीक है, वो आप हर पेशेंट का डिटरमाइन करते हो कि कितने सेंटीमीटर तक अंदर यू हैव टू इंसर्ट द ट्यूब. तो 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर ऐसी मार्किंग आती है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस from the nasal tip to the tragus of the ear, and then from the tragus of the ear till the xiphoid process. तो वो जितना total distance होता है उतना length of tube should be inserted into the nose. ठीक है, and it is lined with a radio opaque margin just to visualize it on an X-ray. ठीक है, so this is the nasogastric tube placement. आप पहले measure करते हो and then you introduce it into the patient. Then there are surgical drains. Basically drains जो होते हैं, they act as a channel to allow for the escape of any edematous fluid or hemorrhage from the site of surgical procedure. तो अगर आपने surgery की and you have created a lot of dead space, you have taken a lot of tissue out और वहाँ पे एक dead hollow cavity बन गया, तो वो hollow cavity can become a container for pus or it can become a container for edematous fluid or hemorrhage. So to make sure that the wound heals faster and this continuous drainage takes place, you have certain surgical drains. ठीक है, so you have these are the different types of surgical drains that you can insert into the insert into the surgical site and create a patent site for drainage of fluids out of the operated area. Then these are your Foleys catheter. ये होता है Foleys catheter. These are basically your urinary catheter. When you are doing a surgical procedure and you want to, and it is going to go long for a very long period of time, then what you do is you place this catheter inside the urinary bladder of the patient and connect it with a uro bag, and so that urine gets collected in that urine bag till the time the patient gets mobilized again. ठीक है, तो अगर कोई grafting procedure है या कोई prolonged surgery है where the patient cannot be mobilized, so you just place this urinary catheter. Okay, so quickly coming to the questions, when you are doing a suturing, at what position will you hold the needle prior to insertion in the tissue? It will be at the junction of two-third and anterior 2/3 and posterior 1/3. Why is it important? Is if you will hold it very close to the attachment of the needle with the suture material, then it will get separated. Okay, and if you will place it very much anteriorly, then the blade sharpness will go away. So the ideal position where you have to hold is at the junction of anterior 2/3 and posterior 1/3. Very good. So what should be the when taking a bite, what should be the ratio of distance from the edge of 1 is to 1. 1 is to 1. 1 is to 1. Okay? That is the minimum dimension that you have to do. Selden's catpaw and Langenbach retractors are used for. मैम आगे वाले का आंसर क्या था? किसका 1:2 क्या होगा? 1:1. इसके आगे वाला क्वेश्चन का 1:1 is the ideal. So this is retraction of the soft tissue. So the type of intubation that you are going to use in a cleft patient. ठीक है, तो cleft patient में ideal तो वही रहेगा. If you are doing a cleft palate RE north pole, if you cannot use, then you have to use a fiber optic. Now fiber optic में क्या होता है? That you use a light source which is introduced along with the endotracheal tube. तो जो ट्यूब होती है उसके साथ हम एक लाइट सोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ये जो एंड हम इंट्रोड्यूस करें ना, इसी के अंदर हम एक लाइट की वायर डाल देते हैं. तो as you pull it towards the trachea,
fiber optic में that fiber optic means it visualize जो it illuminates the fibers of the nasotracheal of the endotracheal tube, and you can also visualize till what level you have inserted. So जितने भी difficult intubations होते हैं in TMJ ankylosis or even in very difficult trauma cases, you will prefer a fiber optic intubation. Okay, so for a cleft patient you can do a fiber optic intubation. All right, next is retractor with a V-shaped appearance at the working end is Obvious. ovigescence. Yes. How does an osteotome differ from chisel? Bibeveled. It is bibeveled. Osteotome or chisel? Osteotome. True regarding piezosurgery is? Decreased morbidity. Very good. It is not going to cut your nervous tissue or vascular tissue. What is the basis for naming of plating system? Thickness of Thread diameter. What is the advantage of chromic gut over plain gut? Resorb later. It is basically resorbing later. What is not true regarding this we have already done. Tapping is required in a screw. So आप एक driver holder say you do, or you have to tap with a mallet. Tapping is basically required in those screws which are non-fluted. Fluted मतलब उसमें thread नहीं होगा, plain होगा, right? So fluted ones, once you create a hole, they will just with the driver holder they will just engage. But tapping is required when the threads are absent and it is a non-fluted screw. Understood this point? Yes, ma'am. Okay. What type of retractor is used for lingual flap in third molar? Broad Broad-end retractor. Which is having least adhesiveness and maximum plasticity? Proline is the this question gets asked very commonly. What is this instrument? Towel clip. Okay. Towel clip is basically when you are draping the patient, you are holding that drapes over the patient with the help of this towel clip. What is the blade which is used for the drainage of abscess? 11. ठीक है. What is this which is shown in the picture? यहाँ पे कोई pilot balloon नहीं है. ठीक है. Endotracheal tube में एक pilot balloon होता है which is used to inflate the cuff. ठीक है. जो cuff होता है ना उसको inflate करने के लिए एक pilot balloon होता है. You can see this. ठीक है. ये जो cuff है ना यहाँ पे, तो इसमें कोई pilot balloon नहीं है. It's a simple tube. So do you think it is an endotracheal tube? Riles tube. हाँ, Riles tube. This is the feeding tube. और tracheostomy tube में you know that there is an inner port and an outer framework, right? कोई confusion तो नहीं है? ठीक है, इसमें option complete नहीं आए हुए, but this is a Riles tube or a nasogastric feeding tube. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What is the gold standard for verifying proper endotracheal? Capnometry. What is capnometry? Then forceps which is shown in this. Alice forceps. This is which tube? Endotracheal. अरे दो ports दिख रहे हैं ना इसमें, एक outer port और एक inner port है. Tracheostomy tube, right? Any other doubts? Anything else? Foleys catheter क्या होता है? Uses क्या होता है? Foleys catheter basically urinary catheter होता है. It is basically when the patient is immobilized and cannot go to the washroom, है ना? तो आप क्या करते हो? एक tube you basically introduce a kind of catheter into the urinary bladder and the urine gets collected in that bag connected to this catheter. तो इसको identify करने के लिए क्या होगा कि इसमें एक you have a balloon end, ठीक है? You'll have a balloon end. एक साइड पे balloon end होगा टिप पे, and दोनों at the other end you will have one balloon port and urine drainage port. तो जो balloon port होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं? saline push कर देते हैं. So you push about 15 ml of saline through this port. तो उससे क्या होता है? ये balloon जो है inflate हो जाता है and it doesn't get displaced from the urethra में नहीं displace होता. Urinary bladder में ही it stays in its position. And then this urine drainage port is connected to the urobag from where you can see the collection of the output urine. Ma'am, it can be used in oral cavity also? नहीं, ये तो urine collect करने के लिए ना. Ma'am, this time in aim. It was near the nose. अच्छा ये वाला, अच्छा वो trauma for surgeries में बोल रहे हो आप, nasal hemorrhage में.
हाँ, so Bleeding control basically value. पैकिंग, हाँ पैकिंग के लिए यूज कर सकते हो. Foley's catheter is also used to control, I was saying the other way, जब आपका posterior nasal bleed होता है ना, so you can use this Foley's catheter and it can, the balloon can be inflated and this can plug that nasal bleeding, posterior nasal bleeding. Yes, ma'am. ठीक है हेली? Ma'am, हाँ in जी. cleft palate patients, if the fiber optic intubation is not an option, then what would we choose? ये बेसिकली तो जो कन्वेंशनल है वो नॉर्थ आ रही ट्यूब्स है. ये फाइबर ऑप्टिक, हाँ नॉर्थ पोल आ रही ट्यूब्स है. द थिंग इज विद फाइबर ऑप्टिक ना, यू आर नॉट गोइंग टू डैमेज, वो ऑलरेडी पैलेट में एक होल है, यू आर नॉट गोइंग टू इंजर द पैलेट. सो द आइडियल मेथड ऑफ इंट्यूबेशन विल ऑलवेज बी अ फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन. Okay, ma'am. एनीथिंग एल्स? हाँ जी. मैम फ्रैक्चर से, सुरभि. मैम फ्रैक्चर का एक क्वेश्चन है. हाँ. ट्रीटमेंट ऑफ सैजिटल स्प्लिट कॉन्डाइलर फ्रैक्चर. हम्म. ऑप्शंस है नो ट्रीटमेंट, ORIF, रिडक्शन फॉर 4 weeks एंड फिजियोथेरेपी, एंड रिडक्शन फॉर 2 weeks एंड इलास्टिक गाइडेड. आई थिंक ये एम्स का क्वेश्चन है ना, AIPG का, वो पल्स में. हाँ PGI का है, PGI जून 2013. हाँ. 4 weeks and physical. सो इसमें फिजियोथेरेपी वाला आंसर दिया हुआ है ना उन्होंने. वो मैम रिड्यूस, वो दिए हुए रिडक्शन फॉर 2 weeks एंड इलास्टिक गाइडेड. हाँ सॉरी, रिडक्शन फॉर 2 weeks एंड इलास्टिक गाइडिंग. बेसिकली जो सैजिटल फ्रैक्चर्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि यू हैव डिवाइडेड इनटू अ मीडियल पोल और लेटरल पोल. तो आपका जो कट है ना, दिस इज गोइंग इन अ सैजिटल डायरेक्शन, इन अ मीडियल पोल एंड लेटरल पोल. तो उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इन दैट केस प्लेटिंग इज नॉट एन ऑप्शन. और इफ जो है ना, हो नहीं पाता क्योंकि आप मीडियल पोल और लेटरल पोल को नहीं कनेक्ट कर पाते. सो इन दैट केस यू विल ओनली यूज क्लोज रिडक्शन एंड आल्सो योर गाइडिंग इलास्टिक्स. व्हाट आर गाइडिंग इलास्टिक्स? गाइडिंग इलास्टिक्स क्या होता है कि फर्स्ट यू हैव प्लेस द IMF. ठीक है. फिर उसके बाद वंस यू रिलीज दैट IMF, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इंट्रोड्यूसिंग इलास्टिक्स, जो आप ऑर्थोडोंटिक्स में यूज करते हो ना, यू हैव रबर इलास्टिक्स. ठीक है. तो यू प्लेस द इलास्टिक्स ओवर द आर्च बार, ताकि जो ऑक्लूजन है, यू बेसिकली सी इन सैजिटल फ्रैक्चर दैट यू हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्डाइलिन एंड एंटेरोमीडियल डायरेक्शन. तो वो जो ऑक्लूजन है वो स्टेबल रहे. यू मेक द पेशेंट, मतलब एक बार ओपन कर दिया एंड देन गाइडिंग इलास्टिक विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स नॉर्मल ऑक्लूजन. तो वो एक तरह से इट विल नॉट completely immobilize the jaw, but it will continue to guide the patient into its correct occlusion position. ओके मैम. और मैम एक चीज और, कि हम बोलते हैं ना कॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स में वी डू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेटिंग. हाँ जी. तो वो कौन से डायरेक्शन में फ्रैक्चर होगा तब करेंगे? नहीं, सो सैजिटल के लिए ही मैंने बोला कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो आपका फ्रैक्चर होता है वो तो लेवल पे डिपेंड करता है, वेदर इट इज अ कॉन्डाइलर नेक फ्रैक्चर, हेड फ्रैक्चर या फिर सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है. सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पे प्लेट करते हैं हम. ठीक है. जैसे जैसे इफ यू गो क्लोजर टू द कॉन्डाइलर हेड, योर प्लेटिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो जो अगर कॉन्डाइलर हेड में अगर फ्रैक्चर है, तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर क्लोज रिडक्शन. जैसे जैसे नीचे सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर आता है ना, देन इट बिकम्स वेरी एक्सेसिबल. तो आप दोनों साइड पे प्लेट कर सकते हो, एंटीरियर बॉर्डर पे भी और पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी. तो जो लो लेवल के जो फ्रैक्चर्स होते हैं ना, विच आर रनिंग फ्रॉम द सिग्मोइड नॉच टुवर्ड्स द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस. ठीक है. जो सब कंडाइलर फ्रैक्चर विच आर रनिंग फ्रॉम द सिग्मोइड नॉच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर, वहां पे बहुत इजी होता है एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर प्लेटिंग करना. सो द डायरेक्शन विल बी इन दैट वे. ओके. ठीक है. और कुछ? पायल. पायल. हाँ जी. मैम चाइल्ड में अगर मैंडिबुलर फ्रैक्चर है तो मैम जैसे हमें IMF करना होता है फॉर 10 days के लिए, 7 to 10 days, एंड देन अर्ली मोबिलाइजेशन करनी होती है ना. वो कॉन्डाइलर फ्रैक्चर की बात हो रही है ना. अगर हमारा बॉडी फ्रैक्चर है या सिम्फाइसल फ्रैक्चर है, देन वी आर डूइंग दैट सर्कममैंडिबुलर स्प्लिंट. यस मैम, यस मैम. है ना. तो मैम क्वेश्चन है, कुछ मेंशन नहीं है, द डिस्प्लेस्ड मैंडिबुलर फ्रैक्चर इन अ चाइल्ड शुड बी मैनेज्ड बाय. सो बेसिकली ये जो पुराने AIPG के क्वेश्चंस होते थे, उसमें वो लोग मेंशन करते थे वेदर द ऑक्लूजन इज मेंटेन्ड और नॉट मेंटेन्ड. है ना. अगर ऑक्लूजन मेंटेन होता है तो वी कैन आल्सो कीप द पेशेंट इनटू कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग. बट इसमें मतलब ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है पायल, वेदर इट इज इन PGI कहाँ पे है? पल्स में. एंड द क्वेश्चन इज, एक बार रिपीट करना. मैम डिस्प्लेस्ड मैंडिबुलर फ्रैक्चर इन अ चाइल्ड शुड बी मैनेज्ड बाय. अच्छा. सो डिस्प्लेस फ्रैक्चर ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? गनिंग वो दिया हुआ है, कैप स्प्लिंट वगैरह कुछ दिया हुआ है? मैम सर्कल मैंडिबुलर वायरिंग, अर्ली मोबिलाइजेशन, इंटरमैक्युलर फिक्सेशन और ट्रांसमिशन. अच्छा. तो इसमें बेसिकली डिस्प्लेस है, तो मेरे हिसाब से तो स्प्लिंटिंग होना चाहिए, सर्कममैंडिबुलर वायरिंग. अर्ली मोबिलाइजेशन.
अर्ली मोबिलाइजेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेस फैक्टर को कैसे रिड्यूस होगा? मतलब भाई हम करेंगे अर्ली मोबिलाइजेशन बट इनिशियली तो हमें फिक्स करना है। हाँ, रिड्यूस करना पड़ेगा डिस्प्लेस फ्रैक्चर को. So either you have to do a brittle wire or you have to do a circummandibular wire to stabilize and bring it back to its original position. फिर उसके बाद once it has 7 days के लिए जब immobilize हो जाएगा, you can take the splint out and you can go for early immobilization. But ये question I don't know if it is correct or not. चेक करना पड़ेगा पायल. Ma'am, there is one more question. हाँ जी. Ma'am, mesoangular. सुरभि. Ma'am, mesoangular level A class 1 impacted हाँ, mandibular मैं अभी third molar. impaction we will do the impaction then we'll discuss. अभी इसके बाद next topic is impaction only. We can Okay, discuss okay, it ma'am. after that. ठीक है? Okay, ma'am. Any doubts in instrumentation? कोई doubt कोई like identification में? हाँ जी. वो जो अभी हमने दिखाया था नॉन फ्लूटेड क्वेश्चन, वो एक बार प्लीज. आशा कौन सा वाला? ये अभी जो दिखाया था नॉन फ्लूटेड और टेपरिंग करने पे नॉन फ्लूटेड. अच्छा, नॉन फ्लूटेड स्क्रूज जो आप बोल रहे हो. ओके, सो बेसिकली जो स्क्रूज होते हैं, इफ यू विल सी, दे आर बेसिकली थ्रेडेड. जो हम यूज करते हैं ना, दे आर बेसिकली थ्रेडेड स्क्रूज. ठीक है. एंड जो हमारा लैग स्क्रू होता है उसमें क्या होता है, जो थ्रेड्स होते हैं वो बिल्कुल एक एंड पे होते हैं. सो देयर इज वन स्क्रू विच इज नॉन फ्लूटेड, मतलब वो बिल्कुल प्लेन रहेगा, राइट? देयर विल बी नो थ्रेड्स इन इट. तो उसको हम क्या करते हैं, वी हैव टू, आफ्टर वी हैव क्रिएटेड अ होल, टू इंगेज इट इनटू द बोन, वी हैव टू टैप इट. तो जो नॉन फ्लूटेड होते हैं उसको टैप करना पड़ता है. जैसे आप मैलेट से ब्लो करते हो ना, वैसे आप टैप करते हो उसको, ताकि इट विल इंगेज द बोन कंप्लीटली. मतलब जो स्क्रू हेड है वो वहां तक इंगेज कर ले, तो उसके लिए टैपिंग रिक्वायर्ड होती है. तो वो दैट इज रिक्वायर्ड इन नॉन फ्लूटेड स्क्रूज. थैंक यू सो मच. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी. Ma'am, हाँ जी, Riles tube or infant feeding tube. सुरभि, योर वॉइस इज वेरी लो. थोड़ा लाउड हो सकते हैं. राइल्स. Riles tube और infant feeding tube में क्या difference है ma'am? सो बेसिकली जो राइल्स ट्यूब होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, दिस इज मेनली फॉर योर फीडिंग एंड ऑल दैट. ठीक है. जो इन्फेंट, मतलब इन्फेंट फीडिंग वाली ट्यूब जो होती है ना, वो बहुत स्मॉल होती है. अभी जो आप कन्वेंशनल राइल्स ट्यूब देख रहे हो, उसमें जो मार्किंग होती है वो स्टार्ट होती है 55 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 65, 70. तो इन्फेंट का तो साइज बहुत छोटा होता है, तो उसमें बेसिकली साइज इज वेरी स्मॉलर इन्फेंट फीडिंग का. ठीक है. इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस 70 सेंटीमीटर की मार्किंग. तो इतना तो इन्फेंट में होगा नहीं, तो इट इज बेसिकली वेरी स्मॉल इन साइज. Okay ma'am. कुछ और? Okay, so we'll now start with the impaction topic. Okay.